Assalamu alaikum. Today's our topic strategic planning. The process of developing and maintaining a strategic fit between organization's goal and capabilities and its changing marketing opportunities is called strategic planning. Planning is performed to address changing environment and consumers, develop shares goal with an organization, address competitive threat to anticipate the future. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नंबर फर्स्ट पे आ जाती है. मेजर एक्टिविटीज़ इन स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इंक्लूड्स डेवलपिंग द कंपनीज गोल्स एंड प्लान्स. टिपिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इश्यूज एंड एम्फसाइज्ड द सर्वाइवल ग्रोथ एंड ओवरऑल. नंबर टू, tactical planning. Tactical planning is concerned with the translating the general goals and plans developed by strategic managers into objectives that are more specific and activities. These decisions or tactics. Operational planning is used to supervise the operation of the organization directly involved with non-management employees implementing the specific plans developed the tactical managers. The role is critical in the organization because operational managers are the link between management and non-management. Characteristic strategic planning. Characteristic strategic planning क्या है ये हम पढ़ेंगे. It encourages management to think ahead systematically. It forces a manager to clarify objectives, policies. It leads to better coordination of company efforts. It provides clear performance standards for control. It is useful fast changing strategic planning process. It is defined developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals, capabilities, and changing marketing opportunities. Number first, strategic planning sets the stage of results planning. The theme, there are 4 steps of strategic planning. Set clear a company mission, setting a company activities, designing a business portfolio, planning and for marketing and other functional strategies. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है वेयर और वही नंबर फर्स्ट पे आ जाता है. इसके 6 पार्ट्स हैं. और डेफिनेशन कंपनी बिजनेस एंड मिशन. मिशन में बी रियलिस्टिक, बी स्पेसिफिक, फिट द मार्केट एनवायरनमेंट, इंडिकेट डिस्ट्रक्टिव कंपनीज एंड सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. इसके 2 गोल्स हैं कि नंबर फर्स्ट पे द मिशन लीड्स टू हायरार्की द ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स शुड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. तो ये इसके 2 है कि ऑब्जेक्टिव गोल्स इसके क्या है कंपनी सेटिंग के. तो ये गोल्स हमने करने होते हैं. तो डिज़ाइनिंग द ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो. द बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी. The best business portfolio is the one that best fits the company's strengths, weaknesses, to opportunities in the environment. In order to design the business portfolio, the business must analyze its current business portfolio, decided which business should receive more, less, or no investment. Develop growth strategies of adding new product or business to the portfolio. Analyzing current business portfolio. In order to analyze the current business portfolio, the company must conduct portfolio analysis, a tool by which management identifies involvements the various business that make up portfolio planning method by Boston. नंबर फर्स्ट पे है कि यूजिंग द बेंच अप्रोचेज वेयर कंपनी क्लासिफाइल ऑल इन SBUS according to the growth share matrix. The vertical axis market growth rate provides a measure of market attractiveness. The horizontal 4 types SBU identified. स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क, डोर्स. स्टार्स में ये है कि हमारा जो हमने बिजनेस और कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाई है वो बहुत अच्छी चल रही है तो वो स्टार्स है. कैश काउ जो नॉर्मल सा हो बिजनेस, मतलब कि ठीक हो, प्रॉफिट हो लेकिन ज़्यादा ना हो. क्वेश्चन मार्क आ जाता है और डॉग्स आ जाता है. फिर the company can investment more in business unit indoor bullet in share. The company can invest enough just to hold at current. Company can have SBU. The company can be devised the SBU. तो ये
Growth share metrics that can be difficult, time consuming, and costly. The implement the management may find out difficult to define SBOs and measure market share and growth. The focus on classifying current business provide little advice. Future the can be lead company to placing or too much emphasize on market share growth and growth in entry to attractive new markets. This can cause unwise expansion into how new risky ventures and giving up established units to quickly inspect a drawbacks. Most firms still committed and strategic planning. तो ये ग्रोथ में शेयर मैट्रिक्स होते हैं जो हमारा ग्रोथ शेयर आ जाता है इस पे।